ஸ்ரீமத் மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 16. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் ஸ்கந்தா 1 சாப்டர் 16. பரீட்சித்தின் திக் விஜயம். சூத உவாச்ச தத பரீட்சித்விஜவர்ய சிக்ஷயா மஹிமஹா பாகவத சசாசஹ யதா ஹி சூத்யாம் அபிஜாத கோவிதாஹ समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीं जनमेजयादींश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान् आजहाराश्वमेधां स्त्रीन् गङ्गायां भूरि दक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवाय द्राक्षिगोचराः निजग्राहौजसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्दं गोमिथुनं पता। शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव चिह्नदृक्शूद्रः कोऽसौ गाम्यपदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम् अथवास्य पदाम्बोजम् अकरन्दलिहांसताम् किमन्यैरसदालापैरायुषो यदसद्व्ययः क्षुद्रायुषां नृणामङ्गमर्त्यानामृतमिच्छताम् इहो बहुतो भगवान् मृत्युसामित्रकर्मणि न कश्चिन्म्रियते तावद् यावदास्त इहान्तकः एतदर्थं हि भगवान् आहूतः परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः। सूत उवाच यदा परीक्षित् कुरुजाङ्गले शृणोत् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्तामनति प्रियां ततः शरासनं संयुग शौण्डिराधधे स्वलङ्कृतं श्यामदुरङ्गयोजितं रतं मृदेङ्ग्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाश्वद्विपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् गुरून् किं पुरुषाधीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिं तत्र तत्रोपसृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमानं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रीत्युज्जृम्भितलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामनाः सारथ्यपारशदसेवनसख्यधौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणीतं च विष्णोर्भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् नातिधूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे धर्मपदैकेन चरन् विच्चायाम् उपलभ्य घाम्
पृच्छति स्माश्रुवदना विवत्सामिव मातरं। धर्म उवाच कश्चिद्भद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छायासी म्लायते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्भ पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमानम् आहो सुरादीन् हृदयज्ञभागान् प्रजा उतस्विन्मघवत्यवर्षति अरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विभालान् शोचस्यतो पुरुषा धैर्यवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मन् ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाघ्र्यान् किं क्षद्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि इतस्तो वासनपानवासः स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम् यद्वाम्बते भूरिभरावतार कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि इदं मम चक्ष्व तवादिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वा ते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं कृतमम्ब सौभगम् धरण्युवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहैः सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्याग सन्तोष आर्जवं शमोधमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिश्रुतं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानोऽनहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तदाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुतितं यदभाङ्गमोक्ष कामास्तप समचरन् भगवत्प्रपन्नाः सा श्रीस्ववासम् अरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रीनत्यरोच उपलभ्य तथो विभूतिं लोकान् स मां व्यसृजदुस्मयतीं थधन्ते यो वै ममाति भरमासुरवंशराज्ञाम् अक्षौहिणी शतमपानुदधात्मतन्त्रः त्वां दुस्तमून पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषु रम्यबिभ्रदङ्घम्
का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः तयोरेवं कथयतो पृथिवीधर्मयोस्तथा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीं सरस्वतीं. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தத்தில் 16வது அத்தியாயம் முற்றிற்று. கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.